Hello everyone, how are you all? So I am Siddharth Kumar Jha and I welcome you back to my YouTube channel Study Simplified. So recently we have completed our machine learning course where we have learned the fundamental concept of machine learning and build a couple of beginner level projects. However, after completing the course, I felt that learning only the theory and building just one or two projects is not enough to become confident in machine learning. So the best way to learn machine learning is by building projects and solving the real world problems. So I am going to launch a brand new playlist uh, for machine learning project where we will build 6 to 7 projects from beginner to advanced level. So in this series, we shall not only write the code but also understand the complete machine learning workflow, including data preprocessing, data visualization, model training, model evaluation, and prediction. So we shall start with simple project and gradually move towards more practical and advanced applications. Okay. So in today's first project, we are going to build a student performance prediction system using student related information such as gender, parental education, lunch type, taste, preparation, course, reading score, writing score. Our machine learning model will predict a student math score. Okay. So by the end of this video, you shall understand how to load a real world data set, process the data, train a machine learning model, evaluate its performance, and make the prediction on new data. So without wasting any time, let's get started. So before going to start, just understand which topic we'll use to build this model. Okay. So first of all, if you have remember कि हम लोगों ने मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था, डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, मॉडल इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। अच्छा, आप लोग बताइए, जस्ट कमेंट करिए जल्दी कि मॉडल इवैल्यूएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद हो तो। मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था, अगर आप लोग याद कर पा रहे होंगे तो। खैर छोड़ो, अगर नहीं याद कर पा रहे तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, और ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग यूज करेंगे टू बिल्ड द मॉडल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद दिला दो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों को याद है कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। जल्दी जल्दी। क्या हुआ, भूल गए क्या? याद करिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन होता था। हाँ, वैसा ही कुछ जैसा आप सोच पा रहे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच यूज टू प्रिडिक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसा डेटा दिया गया है कि स्टूडेंट का जो है स्टडी आवर्स दिया हुआ है और एग्जाम में स्कोर दिया गया है। ठीक है। तो आप देखेंगे डेटा में कि जैसे जैसे आपका स्टडी आवर बढ़ेगा वैसे वैसे एग्जाम स्कोर भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ज्यादा देर पढ़िएगा तो आपका मार्क्स ज्यादा आएगा। सो द लीनियर रिग्रेशन tries to find out the best fit line through the data. ओके। सो तो वो लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ओके। सो द मॉडल लर्न्स अ रिलेशनशिप लाइक स्कोर इज इक्वल टू m इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टडी आवर्स के ऊपर आपका स्कोर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो m इंटू आवर्स प्लस बी। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो स्लोप क्या होगा, हाउ मच स्कोर इंक्रीजेस पर आवर। कि अगर आप 1 घंटा पढ़े, एक्स्ट्रा पढ़े तो आपका स्कोर कितना ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आप 2 घंटा ज्यादा पढ़े तो आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, ऐसे। ठीक है। एंड बी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है। चलिए अब हम लोग डेटा
प्री प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है कि मान लीजिए डेटा यूज करने से पहले देयर आर मल्टीपल आउटलायर्स एंड मल्टीपल नल वैल्यूज आर देयर इन दैट डेटा सेट। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको रिमूव नहीं करेंगे तो इट विल अफेक्ट इन द प्रिडिक्शन। ओके, एंड इट विल, यू कैन से इट विल इन्फ्लुएंस आवर प्रिडिक्शन। क्यों? अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपको जो है स्टडी आवर्स और एग्जाम स्कोर जैसे जो पिछला था वही मान लीजिए, बट मान लीजिए कि बीच बीच में आपका कुछ डेटा सेट में ऐसा है कि आपका जो है स्टडी आवर्स जो है वो नल है, लेकिन उसमें एग्जाम स्कोर दिया गया है, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना घंटा पढ़ा है और कितना वो किया है। तो हम ट्राई कैसे करेंगे, हम वो लाइन कैसे फाइंड करेंगे? ओके, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो वो हमको लाइन फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा, बेस्ट फिट लाइन मिल ही नहीं पाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा प्रिडिक्शन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा बिफोर ट्रेनिंग आर मॉडल। ओके, so suppose I am giving you an example. So think of it like washing vegetable before cooking. Okay, so मान लीजिए कि आप कोई सब्जी लेके आए। ओके, तो आपको सब्जी बनाने से पहले आपको उसको धोना पड़ेगा, चॉप करना पड़ेगा, फिर आप उसको कुक करेंगे। वैसे ही हम लोग मॉडल बनाने से पहले हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं और डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं टू चेक whether the data is okay to go further to train our model. Okay, so ये हुआ डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब आया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हम जो है कोई भी डेटा सेट है तो उसका 100% हम लोग उसको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते हैं। वी आर कैटेगराइजिंग इनटू टू पार्ट्स, 20% एंड 80%। ओके, इट्स अ स्टैंडर्ड value. Okay, so 80% we are sending for the training part, and 20% we will keep for the testing part. Okay, so what it means, suppose you have 100 of data, there are you have 100 uh, data in your data sets. Okay, so only 80 data you will send for the training part, and remaining 20 you will keep for checking that whether your model is giving the good prediction or the accurate prediction or not. Okay, and model evaluation, अब जल्दी जल्दी बताइए। अब तक तो याद आ ही गया होगा कि मॉडल इवेल्युएशन में क्या करते हैं हम लोग। क्या हुआ, नहीं याद आ रहा? याद करो जल्दी जल्दी। चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो टोटल 4 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम जो है we decide whether the model is good or bad. Okay, so the first one is MAE. Okay, which means it evaluate your model based on the average prediction error. Okay, so suppose your MAE is equal to 4, then you can say that the mean prediction are off by 4 marks average. Okay, so वैसे ही the second one is your MSC, which means penalized layer error. ओके, तो पेनलाइज लेयर एरर क्या होता है, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n y ऑफ i माइनस y कैप ऑफ i का होल स्क्वायर। सो इफ यू आर गेटिंग द लोअर वैल्यू ऑफ MSC means it is better. So the next one is RMSC, which is square root of MSC. So it tells error in the actual score unit. For example, suppose you are getting RMSC is equal to 5.
it means the prediction error is around 5 marks. Okay. And next one is R square. So R square measure how well the model explain your data. Okay. So if so first thing you should note that it value range between 0 to 1. Okay. And if the value is 1, then it is perfect. And if it is 0, then it's poor. And in between, you can categorize. Like if it is zero point 0.9, then it is excellent. If pointed, then it is good. Like that. Okay. तो चलिए, बहुत हो गया बात, बहुत हो गया हम लोग का कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो अब डायरेक्ट जंप करते हैं हम लोग कोडिंग के ऊपर। ठीक है। तो फॉर द कोडिंग वी विल यूज गूगल कॉलर। ओके। सो हम लोग ब्रेव, एक्चुअली आई एम यूजिंग ब्रेव, तो एनी ब्राउजर यू कैन यूज। सो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है गूगल कॉलर। ठीक है। देन यू हैव टू गो द फर्स्ट लिंक, you have click on that and you have to click to create a new notebook. ठीक है। Just a second. uh, it will load and it will give you an interface where you can code. Okay. So see, ये इंटरफेस हम लोग को दे दिया कोड करने के लिए। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द नेम ऑफ द फाइल। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे अनटाइटल्ड 4 जो आप देख रहे हैं, just you have to clear this and you have to give some name. Okay. So we will give like a student score prediction and just hit enter. तो अब आपका देखिए, you can see like यहाँ पे भी नाम चेंज हो गया है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will upload our data set. ओके। तो डेटा सेट अपलोड करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड जस्ट होल्ड अ सेकेंड। तब तक मैं आपको, इट इज कनेक्टिंग, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ ओके। सो यहाँ पे आप लोग अपलोड का साइन आ रहा होगा और यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा आई विल अपलोड। ओके। ठीक है। सो नाउ यू कैन सी लाइक our data is uploaded here successfully. So now we will move further for the coding part. Okay. So before going to code, first understand like the structure, like how we are building the model. So first of all, we have need to import some libraries. Okay. So libraries help you to perform some operation on your data set, or whether it can be read or some arithmetical operation you want to perform. Any operation if you want to perform on your data, so you can do and it helps you there. ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो before moving further, if you need the dataset link, then just mail me here. Okay. So this is my mail ID where you can mail me for the dataset link. Okay. So चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट हम लोगों ने जैसा बोला, वी विल इंपोर्ट द लाइब्रेरी। सो कौन सा लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। So the first one, we will import pandas. Okay. So how we will write for that? So we will write import. आपको क्या import करना है? Pandas as PD. Okay.
तो अब इसको रन कीजिए। रन हो गया। अब हम समझेंगे कि हम लोग पांडास क्या है और ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो पांडास इज यूज फॉर द हैंडलिंग योर डेटा सेट। जो अभी आप इधर डेटा सेट अपलोड किए ना, टू हैंडल दिस डेटा सेट वी आर यूजिंग pandas. Okay, so now we will import numpy. So how we will write for that? We will simply write import numpy as np. Okay, तो numpy क्या करता है? numpy is used for the numerical operation. Okay, now move further. We will import matplotlib and cbon. तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर जानते हैं कि ये क्यों यूज किया जाता है। तो वी विल राइट लाइक इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt. Okay, and import cbon as sns. Okay, just run this. So matplotlib and cbon helps to visualize the data. तो अभी हम लोग आपको आगे दिखाएंगे कि वी विल ड्रॉ द ग्राफ टू अंडरस्टैंड आर डेटा. ओके, so there the matplotlib and cbon helps us. Okay, so the next we will use 10 test split. So for that we will write from, ये सारा sklearn का लाइब्रेरी है. So we will write sklearn sklearn dot model evaluation model selection, sorry, model selection, import train test split. Okay, and next we will import लेबल इनकोडर. तो हम लोग लेबल इनकोडर क्यों यूज करते हैं बताते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेने दो. ठीक है, तो वी विल राइट लाइक फ्रॉम sklearn dot preprocessing import label encoder. Okay, label encoder. एक मिनट, लेबल encoder ऐसे होता है, लेबल encoder. Okay, now we will import random forest regressor. So we will write like from sklearn dot ensemble ensemble import what, क्या इंपोर्ट करना है? रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर. ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन वी विल इंपोर्ट द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. ओके, so how we will import? So from sklearn dot matrix import, कैसे इंपोर्ट करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, कॉमा, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, कॉमा, द लास्ट वन आर टू स्कोर, आर टू स्कोर. ठीक है, नाउ जस्ट रन दिस. चलिए, ठीक हो गया. अब समझेंगे कि ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं. सो द फर्स्ट वन, 10 टेस्ट स्प्लिट डिवाइड द डेटा
into ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट्स। तो हम लोगों ने बताया था ना आपको कि we are not using 100% for the training, we are separating the data into 80 and 20%. So for that we are using train test split. So the next one is your level encoder. So level encoder convert the text into numbers. तो ये हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ता है? बिकॉज यू नो दैट मशीन लर्निंग ऑलवेज डील्स विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो टू कन्वर्ट द टेक्स्ट data into the numerical format, we are using label encoder. And the next one is random forest regressor. So this is the machine learning algorithm we shall use to build our model. Okay. And next one is your matrix. So matrix helps us to evaluate our model performance. So I hope this part is clear for you guys. So now we will move further. So now we will load our data set. Okay. तो हम लोग लोड कैसे करते हैं? So for that we have to write df is equal to pd dot read underscore csv file. ठीक है, read csv। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अपना csv फाइल का लोकेशन दे देंगे। ठीक है, तो we will write like slash student performance dot csv। हम लोग यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, सो जस्ट रन दिस। सो अभी ये हमारा डेटा पांडास जो है वो हमारा डेटा फ्रेम को रीड कर पा रहा है। ठीक है, अब ये रीड कर रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वी विल प्रिंट द डेटा सेट सेव, कि उसका डायमेंशन कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट व्हाट वी विल प्रिंट डेटा सेट सेव। डेटा सेट का शेप हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए कैसे प्रिंट करेंगे? तो हमको लिखना होगा df, जो कि हम लोगों ने डेटा फ्रेम स्टार्टिंग में बनाया, df डॉट शेप। ठीक है, so now we will run this. So it will give the shape of our data. So what it means 1000, 8। तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब there are 1000 column and 8 rows in our data set. ओके, तो चलिए अभी आप लोग को डेटा सेट दिखाते हैं कि क्या वहां पे ऐसा ही है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, you can say 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या है? 8 रोज एंड टोटल कितना कॉलम है? यू कैन सी इट्स 1001 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, क्योंकि 1 पे हमारा हेडिंग दिया हुआ है। तो 2 से स्टार्ट होके 1001 तक जा रहा है। इट मीन्स देयर आर टोटल 1000 कॉलम। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे उसको यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो वी विल राइट सिंपली df डॉट हेड, df डॉट हेड। तो ये क्या करेगा ना कि इट विल शो यू द फर्स्ट 5 कॉलम ऑफ योर डेटा सेट। ओके, सो देखिए यहाँ पे इट इज नंबर, लाइक फ्रॉम इट इज जस्ट अ सीरियल नंबर 0 1 2 3 4 5, and gender you can say female, group B, bachelor degree, and standard none, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपका ओवरऑल डेटा सेट ऐसा दिखाई देता है। सो here we will load our data set into the data frame. So df.shape tell you the number of rows and column. Okay, and df.head display the first 5 record. Okay,
So this helps us to understand the structure of the dataset before processing it. Okay. So now uh, we need some information about our dataset. Okay. So for that we will write df.info. ठीक है. तो अब हम लोग को प्रिंट df.info क्या करता है. चलो देखते हैं. So it will tell you the columns name and the data type and number of non-null values. ठीक है. ये देखिए. Column name and data type and number of non-null values. So there are 1,000 non-null values and data type is object. Why? Because it is in the text format. Okay. और जहां भी आप देखिए math score is given as int 64. Int 64 means it is integer value. ठीक है. So the next part, we will print, uh, we will see if there is any null value or not. So for that, how we will do? So first we will give the heading. So we will give like print. What we are going to print? Missing value. है ना? So /n. /n means it will print in the next line. I have given the wrong /n. Okay, /n. Now we will write like missing value. Okay, and अब हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे. तो वी हैव टू राइट लाइक प्रिंट. क्या प्रिंट करना है. इफ देयर इज एनी नल वैल्यू और नॉट. तो हाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट. तो वी विल राइट df डॉट इज नल. ओके. सो इज नल क्या करेगा. इट विल चेक वेदर देयर इज एनी नल वैल्यू और नॉट. अगर होगा तो ये हमको रिटर्न करेगा वो वैल्यू. तो हम लोग सीधे क्या करते हैं ना, हम लोग सम निकाल लेते हैं डॉट सम. तो अब हमको डायरेक्ट सम आ जाएगा कि कितना नल वैल्यू है हमारे डेटा सेट में. तो वी विल प्रिंट दैट. सो यहाँ पे देखिए मिसिंग वैल्यूज. तो इन जेंडर देयर आर 0 मिसिंग वैल्यू एंड पेरेंटल लेवल एजुकेशन लंच टेस्ट प्रिपरेशन स्कोर कोर्स एंड ऑल. सो हमारे डेटा सेट में देयर आर no null values are there. Okay, so we will move further for the data visualization. If there is any missing value, then we have to remove it. Since in our data set there is no null value, so we will move further. Okay, so the in the next step we will visualize our data. तो विजुअलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है. तो हिस्टोग्राम प्लॉट हम लोग करेंगे. सो सबसे पहले वी विल असाइन द शेप ऑफ आवर फिगर. ओके. So for that we will write like plot dot figure size. Fig size. Figure. Plot dot figure. And we will give the figure size. So fig size is equal to कितना 8,5. 8,5. तो अब ये क्या करेगा कि हमारा जो फिगर आएगा, जो भी हमारा विजुअलाइजेशन ग्राफ आएगा, वो 8,5 के रेशियो में रहेगा. सो नेक्स्ट वन इज we will write the histogram code for plotting the data. So how we are writing that? So we will write like sns dot hist plot of what, our data frame. Okay, and what I want to plot there, our math score. Our math score. Okay, and we will give like beans is equal to 20.
comma KD is equal to true. ओके, सो इसका क्या मतलब होगा हम लोग जस्ट समझेंगे पहले. लेट मी फिनिश code. So next we will give the title of our figure. So for that we will give like plot dot title. We will give like distribution of math. It's math score only. Okay. So we will give like distribution of math score. Okay. So now we are done with the coding. So we will give like plot dot show. So just run this. So here you can see it give you the graph bar histogram plot. Okay. So now we will understand what is beans value. So beans value means you can see here the difference 0, 20, 40, 60, 80, 100. Here also 20, 40, 60, 80. So beans means the difference of two. Okay. So from here you can visualize. So it can help you to understand the data pattern. Here we plot the distribution of math score. So the histogram shows how a score are spared among the students. So what to observe? So, okay. So we can observe like are most students scoring high or are the most student scoring low or the data set is balanced like that. So this gives us the understanding of our target variables. Okay. So now we will move further and we will encode the categorical columns. Okay. So for that, what I have told you in the starting about the label encoder, we have imported it here, no? Just see, label encoder. Okay. So we will use that. Okay. So we will write LE is equal to label encoder, label encoder. ठीक है? So here we will write like which of the value we want to encode. Okay. So here you can see the all data type which are object. We want that it comes in the numerical value so that we can train our model. Uh, okay. So we will give all the name here. So we will write like categorical column. Okay. And we will give the names. So the first one we want to change its gender. Okay. And the next one. So here from here we will copy and paste. Okay. So the next one is your race, na, comma, this one, comma. Next one is your parental level of education. Okay. So next one is your parental level of education, comma. And after that there is lunch and test preparation score. Okay. So lunch, you will copy here lunch, and the last one is your test preparation course. Okay. So
test preparation score. So we have entered all the columns which we want to encode it. Okay. So now we will write for call in categorical column, call in categorical column. What we will do, we will write df dot data frame का जो column होगा df of 4 is equal to le dot fit transform le dot fit transform and df dot call. Okay, so just run this. So here it will encode our this all column into the numerical form. So just see this whether it is happened or not. So for that we will write like df dot head. Okay. So yeah, here you can see like all the value which were in the text form is converted into the numerical well format. Okay. So here you can see and how it happened. Let me explain this. So here you can see like group B, C, B, A, C. So there are total four groups, I think. Race and just a minute. Total three groups are there, A, B, C. So it is categorized. A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to 3, like that. Okay. And the next one is lunch, yes or not. Test preparation course, yes or not. Math score, and that all was in the form of numerical value only. So we have not changed that one. So here we have encoded our data set into the numerical format. Okay. So now we will move further to give the features and target. Okay. So how we will do that? So we will write like x is equal to df dot drop our math score. Okay. And its axis should be is equal to 1. Okay. And we will give for the y also. So y is equal to df and math score. So just run this. So it means in machine learning, feature X. Feature X means the input data used for the prediction. For example, which data we will use for the prediction? Gender, reading score, writing score, lunch type. And the target Y. Target Y means what we want to predict. Okay. So we want to predict the math score. So we have written the target is equal to math score. Here you can see Y is the target. Target is equal to in data frame math score is a target. Okay. I hope this is clear. So now the time for the splitting our data set. So for that, how we will write? So we will write like x underscore train comma x underscore test comma y underscore train comma y underscore test is equal to what train test split and we will give x comma x comma y comma test size. Test size is equal to zero point 0.2. It means
the testing data is equal to 20%. So we not need to assign the training data. We have given the test size means 0.2. It automatically understand the training part. Training data set size should be 80%, and we will give the random state. Random state is equal to 42. Okay, and just run this. So here we have divided the data set into 80% training data and 20% testing data. So training data is used for the learning pattern and testing data is used for the evaluating performance. Okay. So since in our data set there are 1,000 records, so we can say like 800 record is for the training and 200 is for testing. So now we will train the random forest model. Okay. So here we will build our model. So we will write like model is equal to random forest regressor, random forest regressor, and we will give the n estimator and random state. So n underscore estimator is equal to 200, and we will give the value of random state. So random state is equal to 42. Okay, and we will fit our model. So we will give like model dot fit x underscore train, x underscore train, comma y underscore train. Okay, so we have fitted our model. So now, if when the model will ready, so we will write like model training part is ready. So we will print that so that we will get to know whether it is ready. So print model training is completed. Okay, so just run this. So it now you can see like it printed like model training is completed. It means our model is trained. Okay. So we have used the random forest regressor. Okay. So what is random forest? So it combines many decision tree. Okay. Instead of relying one of tree, we are it is a combination of decision tree. Okay. So the final prediction is based on the average of all the trees. So it benefit you can say like there is high accuracy and less overfitting and best performance on real world data. Okay. So now we will make our prediction. Okay. So for that we will write like y underscore y underscore predict is equal to model dot predict what on what we will predict the testing data. Okay. X underscore test. Okay. And we will print that. So print y underscore y underscore predict, and we will print the 10 value. Okay. So we will give like this. Okay, and just run this. So for the 10 value, it predict 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 200 data in the testing part. So from that, we have taken 10 data and we have predicted the score. Which score? Math score. Okay. So now we will evaluate our model. So how we are evaluating our model based on the evaluation matrix. So for that,
in the starting only, you can see we have imported the matrix. Which which one we have imported? Mean absolute error, mean squared error, and R2 score. Okay. So here now we will use that one only. So we will write like MAE. So the first one is MAE. MAE is equal to mean absolute error, mean absolute error, and we will give the value. So value should be y underscore pred. So first one will be test and then prediction. So test comma y underscore predict. Okay, so it's okay. So like that, we will give for the MSC, RMSC, and R2. So MSC is equal to mean squared error, and on what we will do? So y test comma y predict. So y test comma y predict. Okay, so now for the RMSC also we will print. So RMSC is equal to NP. Huh. In the starting, we have import NumPy. So I have told why we are using NumPy to perform the numerical operation. So here you can see it needed. So NP dot square root, SQRT, square root. Okay, square root of what? MSC. If you have remembered these all formula, then you can easily write the code. And next one is R2 square, R square. So R square is equal to R2 score, and we will give the value y test and y predict. Okay. So now we will print that value. Okay. So for the printing part, we will write like print mean absolute error, print mean absolute error. Okay. And here what we will print round. It will use for the rounding of the value MAE comma 2 means from the till 2 decimal it will round off and it will give the value. Okay, so like that we will write for the mean squared error. So we will write like print mean squared error comma in everyone we will round off till 2. So we will give like round off till 2. Next one print which one? Root mean squared error. So root mean squared error. Sorry, I forgot this one. Root mean squared error. Okay, and comma. We will round off it value 2. And the last one we will print what? R2 score. So we will write like R2 score, and it value also we will round it 2. Okay, so just
print this. So here you will able to see the mean absolute error is 4.69, mean squared error is 4.69, and how the all value is coming same. Here I think I have done some mistake. MSC is equal to mean absolute error y test y predict. Okay. MSC is equal to mean squared error is mean squared error and y test and y predict. Okay. And next one is RMSA is equal to root of NP dot square root of MSC. Okay. And R2 is equal to y test comma y predict. So just a second. ये यहाँ ऐसा क्यों आ रहा? सबका वैल्यू सेम. I think there is some problem here. Let me find it. MAE is equal to mean absolute error, and we have given y test comma y predict. Okay, and MSC is equal to mean squared error, and we have given y test comma y predict. Okay, and RMSC is equal to. ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग गलती की, यहाँ पे हम लोग हर एक में एमई प्रिंट करा रहे हैं. यहाँ पे ये हमको एमएससी कराना है ना, एमएससी, एमएससी का वैल्यू राउंड ऑफ करना है, आरएमएससी, आरएमएसई, एंड यहाँ पे R2. चलो अब रन करो इसको. ओके, सो हियर यू कैन सी, वही तो मैं बोलूँ कि ऐसा क्यों हो रहा. यहाँ पे हम लोगों ने सबको ये कॉपी पेस्ट जो कर दिया ना, अराउंड एमई कॉमा 2, तो सब में एमई का वैल्यू ही प्रिंट हो रहा था. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो यहाँ पे देखो एमई का वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका वैल्यू हमको 4.69 आ रहा है. तो इसका मतलब आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग आल्सो, इट मींस लाइक average prediction error. So average prediction error is off by, you can say, 4.69 marks on average. Okay, and next one is MSC. So you can say the value is lower. So 36.71. It's quite of lower, you can say. So it means it is better for the model efficiency. Okay, and next one is RMSE. So RMSE is square root of MSC. So it tells the error in the actual score unit. So it value comes like 6.06. It approximates 6 only. So it means like the mean prediction error is around 6 marks. Okay, and R2 squared. So just note it down. It value range from 0 to 1. So if the value is 1, it is perfect, and if the value is 0, then it's poor, and you can categorize in between. So you can say like if it is zero point 0.9, then it is perfect, excellent, and if it is zero point 0.8, then it is good. So here we can see the R2 score is 0.85, so you can say it is excellent only. Okay, so now we will draw the graph. For what? The actual versus the predicted graph. Okay, so for that we will write like plot dot figure size, plot dot figure, and figure size is equal to 10 comma 6. Okay, so here we have assigning the dimension of that. So here we will use the scatter plot. So for that we have to write like plot dot scatter, and on what data we will plot it. So y test and y predict. So y underscore test comma y underscore predict. Okay,
So now we will give the label of x-axis and y-axis. So for that we are writing like plot dot x label, and the x label we will give the actual math score, ACPUAL, actual math score, and for y label, so plot dot y label, we will write here actual. So y level is predicted one. So we will write like predicted math score. Okay. So we have given the x level and y level. So now we will give the title. So what it is. So plot dot title, and we will give actual versus predicted score. Okay. So we will give actual versus predicted score. So I think this is clear. So just we'll show we will show the graph. So for that, we have to write like plot dot show. Plot dot show. So just run this. So yeah, here you can see the actual versus the predicted score. So what we can observe from this graph. Okay. So the graph compares the actual score versus the predicted score. So here you can see if the points are close together, it means the model is performing well. So you can see here the point is to closer, here also the point is closer, here also. So there are so many points which is close to each other. So it means our model is performing well. So the closer the point are to a straight diagonal line. So the better is the prediction. So here you can see also it can come in a straight line. If we will draw a line over here, so it look like a straight line. Okay. So now all set. So we'll move further for the feature importance. Okay. So we will write the code for the feature importance. So here what we will do. So just we will write and then we will see what we are doing. So in our model, we need to check which is influencing our what, which is influencing our result, or you can say output more. Okay, so here you can see there are 8 columns. Okay, total 8 columns. These all are columns. So in 8 columns, which column is influencing our output more? Okay, so that we have to check. So how we will check that? So we will write like importance is equal to model dot feature importance. Okay, model dot feature importance. Okay, and we will give the names. So features underscore name, feature underscore name is equal to x dot column. Okay, so now we will check in our data frame, and we will print the name. Okay, so we will write like importance underscore importance underscore data frame is equal to pd dot data frame, and which value we will insert. So features and importance. Okay, so we will give here features
feature, and we will give like feature name. Okay, feature name, comma, and its importance. Okay, so we will print it like importance, feature importance, importance. Okay, so now what we will do? So we will create the importance data frame. Okay, so we have to write it like importance data frame is equal to we will sort by value. So suppose if something some value is higher influencing our model to give the output. So uh, it will you can say arrange it in that order. Okay. So for that we will write like importance the underscore data frame is equal to importance. We want to sort now in underscore df underscore sort. Sorry, in df dot sort and sort values. Okay, by values we will sort it, and we will give the value by is equal to importance, comma, in the ascending order is equal to false. Ascending is equal to false. Okay, so now we will just print it. Okay, so now we'll print it simply. So for that we will write like print what we have to print importance dot underscore data frame. So here just run this. So here you can see the reading score is influencing by 56% of our model output. Like that, writing score is 24%, gender is 12%, 0.26%, 0.23, like that. It is arranged that all score. Okay. So now we will draw it graph to get the better understanding, like how in the graph it is visually clear, like how the reading score is influencing more and how the writing score is influencing less, like 24%, 12%, like that. So for that we will write plot dot figure, and we'll give the figure size. Figure size is equal to 10 comma 5. Okay, so here I have assigned the dimension of the figure. So the next one we will write like sns dot bar plot, and here we will give the value. So in the x axis we want importance, and in the y what we want in y is equal to we want feature, y is equal to feature. Okay, and features comma data is equal to, and on what data we are plotting it. So data is equal to importance here.
data is equal to importance 0. Okay, so it's clear now. So now we will give the title and we will plot it. So for that we have to write like plot dot title, and here we will give like feature importance, and now we will plot it. So for that we have to write like plot dot show. Okay, so just run this. So here you can see like the reading score has more value, means the reading score is influencing our model more. Okay, so like that, writing score, gender, race, and parental level of education, like that. Okay, so now the time is to the score, predict the math score for a new student. Okay, so for that we will write new student is equal to, and here we will give the input. Okay, so we will give like 0 means it is female, 2 means it is from the second what, 2 means B section. Okay, am I clear? So and the we will give the 3 comma, 3 is your parental education level, and 1 is for lunch, and 1 is for test preparation, and we will give the reading score and writing score. Means we are giving randomly like 75 is the reading score and 80 is the writing score. Okay, so here we have given the data for a new student. So we will just predict it math score. Okay, so we will write like prediction is equal to model dot predict of what new student, new student, all set. So here so we are writing like prediction is equal to model.predict for whom it will predict new student. Okay, and now we will print that. Okay, so we will print. So we have to write like print prediction math score. So predicted math score. Okay, so we have to round it. So for that, how we are writing. So we have seen like we are writing like round of the value of what, prediction of prediction in 0 to 2. Okay, so 0 comma 2. So just run this. So see, here it gives like the predicted math score is 67.909. Okay, so it means our model is trained and it gives the perfect output for the new student. So we will check for the another one also. So just copy and paste it. So here we have seen like if we will increase the reading score, means the 56% it will influence our prediction. So here just we will do it 100, our reading score. So let's see whether the value is increased or not. Yeah, here we are getting 79.23 marks, and here we were getting 67. So yeah, you can say like it influencing more. So now we will enhance the writing score also.
So here we will give like 100, and writing a score also will make it like 100. So now we will done. So here we can see like the math score is 91. So here you can see like the reading score and writing score and all the columns is affecting on our model prediction. So this is how it predict the marks for a new student. It's math score. So I hope this is clear. So this is full code for the project. So if you need the code, then don't mail me. If you need the data set, then just mail me in my Gmail. Here I have given you my mail ID. So here you can mail me. So for the data set only, because I want that you just code by seeing here. So it help you to write the code, and it also help you to enhance your skills. Okay, so by this off, I am winding up today's video. So if you guys has really enjoyed this project, then just hit the like button and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to share it with your friends. So see you in the next video. Tab tak ke liye keep learning and keep exploring. Bye bye.